गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। हमारा आज का पहला टॉपिक है रायसीना डायलॉग। तो पीएम मोदी जो है उन्होंने इनॉग्रेट किया है 7th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग, और ये इस बार हमारे जो चीफ गेस्ट हैं इसके वो हैं प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो इस साल का जो थीम है वो है टेरानोवा, इम्पैशंड, इम्पेशेंट एंड इम्पेरल्ड। तो टेरानोवा का मतलब क्या होता है? न्यू लैंड, या फिर जिसको आप कह सकते हो न्यू अर्थ। तो हम क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इसलिए टेरानोवा को एक थीम रखा गया है। तो ये रायसीना डायलॉग जो है एक्चुअली 2016 में सबसे पहली बार स्टार्ट हुआ। एक मल्टीलैटरल कॉन्फ्रेंस है, न्यू दिल्ली में इसको होस्ट किया जाता है। और रायसीना ही नाम क्यों रखा है? क्योंकि रायसीना हिल के नाम पर इसका डायलॉग का नाम रखा गया है। तो रायसीना हिल को हम एक तरह से हम ये मानते हैं कि इनफॉर्मल हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रायसीना हिल जो है उससे डिनोट करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा हिल है, एलिवेशन है न्यू दिल्ली में, जिसके ऊपर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सीट है। हमारा प्रेसिडेंशियल पैलेस जो है, राष्ट्रपति भवन, वहीं पर सिचुएटेड है। तो यहीं से ये रायसीना हिल के ही नाम से रायसीना डायलॉग रखा गया है। तो इसको कौन ऑर्गेनाइज कराता है? हमारी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है एक, जो आपके एक थिंक टैंक है बहुत फेमस, ठीक है। तो वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ मिलकर इसको हर साल जो है वो ऑर्गेनाइज कराते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है बोलार्ड पुल टग्स। तो टैब्मा शिपयार्ड लिमिटेड, जो कि एक होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है ओशन स्पार्कल लिमिटेड के साथ। वो 262 टन बोलार्ड पुल टग्स बनाना चाहते हैं। तो पहली बात तो टग्स क्या होती हैं? टग्स वो मरीन वेसल है जो बाकी वेसल्स को जो है वो खींचने का काम करता है। जैसे आपने देखा होगा ना कि कुछ अगर आप नॉर्मल व्हीकल देखो तो एक ट्रक जो है वो बाकी, अगर आपका कोई गाड़ी ख़राब हो जाती है तो उसको खींचता है, वो आपको कहीं लेके जाना हो तो वो भी टग ही होता है एक तरह से। लेकिन ये एक मरीन वेसल है जो आपके बाकी जो मरीन वेसल्स, अगर वो उनमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, एक तरह से उनको टो करने के लिए ये टग्स बनाए जाते हैं। तो अब जो है इनकी जनरली जो है सर्विस लाइफ 20 ईयर्स के करीब जो है वो होती है। और जो है कहा जा रहा है कि ये फायर फाइटिंग या फिर इवन जो है एनकरेज फैसिलिटीज़ भी जो है वो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस के टाइम पर देते हैं। तो अब इन वेसल्स के बारे में देखते हैं जो ये बनाए जाएंगे। 62 टन के जो 2 बनाने वाले हैं, तो इसको कौन बना रहा है? टैब्मा शिपयार्ड्स फैसिलिटी बना रही है मालपे में, जो कि कर्नाटका में स्थित है। तो इसके कुछ फीचर्स हैं यहाँ पे कि 33 मीटर की लेंथ होगी, ब्रेड्थ इसकी 11.9 मीटर्स की होगी। ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस इतना पता होना चाहिए कि टग क्या होता है, कौन बना रहा है, और जो है ये इसके वेसल का इंपॉर्टेंस क्या होती है। अब बोलार्ड पुल क्या होता है? बोलार्ड पुल का मतलब होता है कि एक आप जैसे आपकी गाड़ी में या आपकी व्हीकल में हॉर्स पावर होता है ना, वैसे ही इसमें जो है एक वेसल को पुल करने की जो एबिलिटी है, वो कितनी उसकी एबिलिटी है, उसको हम बोलार्ड पुल से नापते हैं, ठीक है। उसको हम मेजर करते हैं बोलार्ड पुल से, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्यूचर जो है इसके ऊपर डिपेंडेंट है। हमारे इंडिया भी इसके साथ आने वाले टाइम में इसके हिसाब से ही लॉ बनाने वाला है इंडिया में भी। तो अब देखते हैं ये टॉपिक है क्या। डिजिटल सर्विसेज एक्ट और डिजिटल मार्केट्स एक्ट। तो यूरोपियन पार्लियामेंट और या फिर यूरोपियन यूनियन के मेंबर स्टेट्स जो है वो एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट पर आ गए हैं, वो डिजिटल सर्विसेज एक्ट जो है वो पास करना चाहते हैं। तो एक्चुअली ये 2020 में प्रपोज किया गया था ईयू कमीशन द्वारा। और इसमें क्या कहा गया था कि जो इंटरमीडियरीज हैं, जो आपकी जैसे गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, ये खुद तो कुछ कंटेंट नहीं बनाते हैं, ये इंटरमीडियरीज हैं यूज़र्स के बीच में। ये जब कंटेंट को मॉडरेट करते हैं, ठीक है, मतलब ये आपके कुछ ट्वीट को या आपकी पोस्ट को जो है सेंसर करते हैं या सेंसर नहीं करते हैं, तो ये उनके डिसीजंस जो हैं उसको जो है आपके ईयू के जो मेंबर्स हैं या ईयू के यूज़र्स हैं उनको प्रोटेक्शन देने के लिए जो है ये डिजिटल सर्विसेज एक्ट जो है वो लाया गया है, ताकि जो बड़ी इंटरनेट कंपनीज़ हैं वो डिसइंफॉर्मेशन, इलीगल और हार्मफुल कंटेंट के ऊपर रोक लगा सकें, ठीक है। तो ये ऑफ कोर्स अब ये आपके पिछले ही महीने हमने देखा था, डिजिटल मार्केट्स एक्ट भी आया था ईयू का, उसी के साथ इसको जो है कॉम्प्लीमेंट करने के लिए डिजिटल सर्विसेज एक्ट भी जो है वो निकाला गया है। तो एक थोड़ा सा रिवाइज करते हैं जो है ईयू का डिजिटल मार्केट्स एक्ट भी। तो ऑफ कोर्स इसमें जो है कंपनीज़ को गेट कीपर्स कहा गया था। तो गेट कीपर्स कौन सी कंपनीज़ हैं? जैसे एप्पल, फेसबुक, गूगल एक्सेट्रा ऑफ कोर्स। अब इसमें कहा गया है कि अगर ये प्रोविजंस जो हैं डिजिटल मार्केट्स एक्ट के, इनको ये गेट कीपर कंपनीज जो हैं वो वायलेट करती हैं, तो उनके ऊपर 10% तक का जो है उनकी ग्लोबल एनुअल सेल्स, सिर्फ ईयू के अंदर सेल्स नहीं, ग्लोबल एनुअल सेल्स का 10% उनके ऊपर जुर्माना लग सकता है पहली बार में। अगर वो दूसरी बार या फिर बार बार रिपीट करती हैं ऐसी जो है गलतियां, तो उनके ऊपर 20% का जुर्माना लग सकता है, और इवन वर्स्ट केस सिनेरियो में उनके ऊपर बैन भी लगाया जा सकता है। तो अब जो है
उन्होंने कहा है कि गेट कीपर्स कौन होते हैं, जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन को जो है कंट्रोल करते हैं, है ना। तो जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जिन्होंने बनाया है, डिफाइंस मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो आपके गेट कीपर्स हैं। वो आपको आपके कंटेंट को मॉडरेट करते हैं, आपके कंटेंट की गेट कीपिंग, आपकी एक तरह से वॉचमैन है वो आपके कंटेंट के। तो उनको गेट कीपर का रोल दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने डेफिनेशन भी दिया, हमको डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है ऑफकोर्स। यहाँ पर डेफिनेशन दिया कि कौन कौन गेट कीपर्स होंगे। बट प्रपोजल्स हैं क्या डिजिटल मार्केट्स जो है आपके एक्ट के अंदर। तो उसमें कहा है कि यूज़र जो हैं, आप और मेरे जैसे यूज़र्स, हमारे पास ये राइट होना चाहिए कि हम कौन सी ऐप को इंस्टॉल करेंगे और कौन सी नहीं करेंगे। तो आपने देखा होगा ना कि आप फ़ोन खरीदते हो, प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स आती हैं आपके, जो एप्पल या गूगल है वो पहले से ही इंस्टॉल करके देते हैं ऐप। तो वो अब से नहीं हो पाएगा ईयू में एटलीस्ट। इवन जो बेसिक ऐप्स, जैसे आपको याद होगा कि जो जनरली एंड्रॉयड फ़ोन्स में आपके क्रोम आता है या एप्पल के फ़ोन्स में सफारी नाम से ब्राउज़र आता है, वो प्री इंस्टॉल्ड आता है। तो वो भी अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि यूज़र्स के पास वो राइट होना चाहिए कि वो कौन सी ऐप अपने इंस्टॉल में रखना चाहते हैं। ईयू जो है वो ये भी कह रहा है कि बेसिक जो मैसेजिंग सर्विसेज हैं, जैसे आपका व्हाट्सएप है, फिर जो है एप्पल में यूज़ करते हैं लोग आई मैसेज, इनमें भी इंटरऑपरेबिलिटी होनी चाहिए। मतलब मैं व्हाट्सएप से अगर मैसेज करूं तो आई मैसेज पे वो मैसेज जा सके। तो ये एक थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है कंपनीज को एडजस्ट करना पड़ेगा आपस में इंटरऑपरेबिलिटी बनाने के लिए। लेकिन ईयू ये भी चाहता है, ठीक है। फिर ईयू ये भी कह रहा है कि जो गेट कीपर्स हैं, जो ये आपके एप्पल, गूगल वगैरह जो हैं, अमेजॉन भी है ऑफकोर्स इसके अंदर, उनको अपने ऐप स्टोर्स का जो है एक्सेस देना पड़ेगा थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स को भी। आपको पता होगा ना कि खासकर एप्पल जो है वो पूरी मोनोपोली बनाकर रखता है, थर्ड पार्टी ऐप्स नहीं डाउनलोड करने देता। तो उनको कहा है कि आप जो है गेट कीपर्स को कहा है कि आप फेयर एक्सेस कंडीशंस दोगे, ताकि अगर कोई यूज़र चाहता है तो वो थर्ड पार्टी ऐप्स भी जो है वो इंस्टॉल कर सके। फिर वो बिजनेस यूज़र्स या फिर जो ईयू में जो डेवलपर्स हैं, उनको सर्टेन सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करने के लिए कह रहा है इन गेट कीपर्स को। ऐसा नहीं हो सकता कि आप समझ लो कि आपने एक ऐप बनाई, ठीक है, और आपने उसको लिस्ट कर लिया ऐप स्टोर पे या गूगल के प्ले स्टोर पे, लेकिन गूगल आपको ये नहीं कह सकता कि आपको इसी पेमेंट, अगर आपको पेमेंट्स चाहिए तो आपको इसी पर्टिकुलर मोड ऑफ पेमेंट के थ्रू ही जो है आपको पेमेंट्स मिल सकती हैं। तो अनफेयर कंडीशंस नहीं लगाई जा सकती उनके ऊपर, ठीक है। फिर उनको कहा जा रहा है कि जो ऐप डेवलपर्स हैं उनको सप्लीमेंट्री फंक्शंस जो हैं फ़ोन के, जो कि आप जब समझ लो कि एंड्रॉयड में गूगल की जो ऐप्स हैं उनको तो सारे फ़ोन का एक्सेस मिला होता है, लेकिन वो क्या सारे ऐप डेवलपर्स को फ़ोन के हर फंक्शन का एक्सेस देते हैं? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं देते हैं, ठीक है। तो इसलिए ईयू कह रहा है कि जो बाकी ऐप डेवलपर्स हैं उनको भी सप्लीमेंट्री फंक्शंस, जैसे कि NFC या फिर चिप जो हैं, इन सब का फंक्शन का आप एक्सेस देना पड़ेगा। फिर अगर कोई बड़ी जो है जैसे कि आपका जो है गूगल एक्विजिशन कर लेता है, या फेसबुक जो है मेटा वो कर लेता है एक्विजिशन, जैसे उन्होंने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को एक्वायर कर लिया था। तो इन केसेस में यूरोपियन कमीशन को आपको बताना पड़ेगा किसी भी बड़े एक्विजिशन या मर्जर में, ठीक है। फिर गेट कीपर्स को कहा है कि वो अपने प्रोडक्ट्स की जो है खुद रैंकिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वो जनरली क्या करते हैं, अपनी जो है अपने प्रोडक्ट्स की, अपनी ऐप्स की रैंकिंग ज़्यादा दिखाते हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी जो उनके कंपेटिटिव जो है ऐप्स हैं। तो उसको भी उन्होंने मना किया है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ओल्गा टेलिस केस। तो अभी जो आपके जहांगीरपुरी केस में एक इम्पॉर्टेंट पुरानी जजमेंट 37 ईयर ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जजमेंट जो है वो आपको हेल्प कर सकती है, ऐसा कहा जा रहा है न्यूज़ मीडिया द्वारा। तो अब ये जजमेंट है क्या? तो ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जजमेंट इन 1985 की आई थी, और इसमें कहा गया था कि जो पेवमेंट ड्वेलर्स हैं, ठीक है, जो आपके जो स्ट्रीट पर जो है जो सामान बेचते हैं, उनको आप ज़बरदस्ती फोर्स के थ्रू नहीं निकाल सकते। एटलीस्ट उनको जो है आपको एक चांस देना पड़ेगा कि वो क्यों वहाँ पर बैठे, है ना। तो उनको एक राइट टू बी हर्ड और उनकी एक रीजनल अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, उनको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, कि बिफोर उनके ऊपर आप ये नहीं कि उनको सीधा जाओ और ज़बरदस्ती उनको उठा के निकाल दो वहाँ से, या उनके ऊपर आप बुलडोज़र चला दो। तो एटलीस्ट उनको कुछ नोटिस दो, उनको एक्सप्लेन करने का एक मौका देना ज़रूर है, क्योंकि जो ये पेवमेंट ड्वेलर्स हैं उनकी भी राइट टू लाइफ और डिग्निटी होती है। तो वो अपनी जो है बेसिक जो है अपनी लाइवलीहुड, राइट टू लाइवलीहुड वहाँ से कमा रहे हैं, और आप उनको जो है डायरेक्टली सीधा जाकर वहाँ से एविक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे।
तो कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि इस साल जो है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे को कराया जाए। तो ये कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे होता क्या है, 5 साल में एक बार किया जाता है। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है कंज्यूमर स्पेंडिंग पैटर्न्स पे, बोथ अर्बन एंड रूरल, और इससे हमें पता लगता है कि एवरेज एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स कितना हो रहा है हमारे अर्बन और रूरल एरियाज़ में, बोथ फूड और नॉन फूड एक्सपेंडिचर, और इवन सर्विसेज के ऊपर भी एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है। ठीक है, तो जनरली इससे हमें पता लगता है कि हाउस होल्ड मंथली पर कैपिटा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कितना है। उसके बेसिस पर ही हम आगे के फैसले लेते हैं कि पॉवर्टी लाइन, हमारी पॉवर्टी कितनी है कंट्री में। तो गवर्नमेंट को एक तरह से लेटेस्ट डाटा इसी से ही पता लगता है कि लोग कितना स्पेंड कर पा रहे हैं। जनरली तो ये सर्वे जुलाई से जून के बीच में कंडक्ट किया जाता है, लेकिन इसका जो है रिजल्ट जो है, जो इस सर्वे का जो फील्ड ने जो डेटा कलेक्ट किया उसका रिजल्ट आता है अगले साल जाकर। ठीक है, तो अगर इस साल ये सर्वे किया जाएगा तो ऑफकोर्स जून 2023 तक जाकर इसका जो है उनको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो अब जो है इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं। तो 2011-12 में जो ये सर्वे किया गया था उसके बाद से कोई सर्वे नहीं हो पाया, तो हमारे पास जो अभी आंकड़े हैं वो 2011-12 के ही आंकड़े हैं। तो अब 2011-12 के बाद एक 2017-18 में भी सर्वे किया गया था, लेकिन उस टाइम पे गवर्नमेंट ने उसको जो है वो डिसओन कर दिया था। उन्होंने कहा था कि ये डेटा क्वालिटी के इश्यूज हैं, ये सर्वे के ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते, तो इसलिए हम अभी तक जो है 2011-12 के आंकड़े पर ही जो है वो सर्वे को बेस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट क्यों चाहती है सर्वे को रिज्यूम करना? बिकॉज ऑफकोर्स हमारे पास 2011-12 के बाद के कोई आंकड़े ही नहीं है कि कितनी पर कैपिटा हाउस होल्ड स्पेंडिंग है। दूसरा, हम IMF के स्पेशल डेटा डिसैमिनेशन स्टैंडर्ड के जो है सब्सक्राइबर हैं, तो इसलिए हमारे ऊपर जो है ये एक ऑब्लिगेशन है कि हमको गुड प्रैक्टिसेस फॉलो करनी पड़ेंगी और हमको ये डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पंचायती राज दिवस। तो पीएम मोदी जो है उन्होंने सारी ग्राम सभा को एड्रेस किया है नेशनल पंचायती राज डे पर। तो ये नेशनल पंचायती राज दिवस क्या है? 24 अप्रैल 1993 के दिन जो है पंचायती राज जो है इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा 1992 में, और इसी दिन वो जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इनफोर्स हुई थी। ठीक है, तो अब इस दिन जनरली हम डायरेक्ट डायलॉग करते हैं पंचायती राज रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, और सबसे पहली बार हमने ये डे कब सेलिब्रेट किया था? 2010 में। ठीक है, तो अब जो हमारा ये 2022 वाला जो है ये हमारा 13th पंचायती राज दिवस है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is Raisina Dialogue. So PM Modi has recently inaugurated the 7th edition of Raisina Dialogue. So the President of European Union is the chief guest of this dialogue this year, and the theme for this dialogue is Terra Nova, impassioned, impatient, imperiled. So Terra Nova, like I've told you, is a term. Generally, it is considered as a Latin term, or even it is famous in Italian. But its meaning is new land or even new earth. So we are considering that we are entering into a new world order. That's why this theme has been specially selected. Okay, so about the Raisina Dialogue, of course, it was started in 2016, and it's a multilateral conference held in New Delhi, of course, hosted by the Government of India and Observer Research Foundation. And Raisina Dialogue, the term Raisina comes from Raisina Hill, upon which the seat of Government of India and the Rashtrapati Bhavan is situated. Okay, so that's why we are using the term Raisina. Okay. So the next topic is Bollard Pull Tugs. So Tabma Shipyard Limited, which is a wholly owned subsidiary of Cochin Shipyard Limited, has entered into an agreement with Ocean Sparkle Limited to build two 62-ton Bollard Pull tugs. So this 62-ton Bollard pull means it is the capacity of a marine vessel to pull the other vessels. Okay, like you have this horsepower in your vehicles, in your engine. So this Bollard pull is a measurement of the capability of a marine vessel to pull another marine vessel. Okay, so what are tugs basically? So like I'm telling you, tugs are those marine vessels which are used to pull or push the other vessels. Okay, like you have these towing vans at the road. Similarly, there are tugs in the marine area. Okay, so generally these are designed and built under the Indian Register for Shipping, and they have a service life of about 20 years. This is being talked about the general tugs which are being built in India, and they also provide firefighting cover and assistance to ships alongside anchorage facilities especially in times of search and rescue operations. Okay, so about these new
agreements that have been entered between Tebma Shipyards Limited and Ocean Sparkle Limited. So these tugs will be built at Tebma Shipyards facility at Malpe, that is in Karnataka, and they will have a length of about 33 meters and a breadth of about 11.9 meters. So you do not need to go into the details of these tugs, but you should know about what is a tug and what is this bollard pull. So like I'm telling you, bollard pull is the measurement of the pulling power of a vessel. Okay, so like I've told you that it is comparable to the horsepower rating in a conventional vehicle engine. So the next topic, very very important topic, EU's Digital Services Act and Digital Markets Act. So of course, one day or another, India would have to accept these rules also, because these rules are very detailed and they are designed to protect the users of internet big tech companies, okay, in India. So anyways, currently only EU has enforced these rules or formulated these rules. So European Parliament and European Union have agreed to or they have reached a political settlement to enforce the Digital Services Act. So this Digital Services Act was of course proposed in 2020, and it aims to regulate the way these intermediaries like Google, Facebook, YouTube function when it comes to moderating user content. So what is the term moderation of user content? So like if you post something very offensive, then your content is moderated, either it is censored or it is removed, or if it is not censored, then maybe there are some, it has been observed that certain content is deliberately not removed, and in that case the moderating function of the is not being kept, or it is not being enforced by the big tech companies. In that case also this Digital Services Act provisions would apply. So basically this act would provide higher protection to all EU users, and it will force big internet companies to act against disinformation and illegal and harmful content. So of course this act, once passed, will work in conjunction with the recently introduced Digital Markets Act of the EU. Okay, so now let us also see the Digital Markets Act of EU. Of course, the focus is on companies because they are being termed as gatekeepers. They are the gatekeepers of your information and your user accounts. Okay, so it is being said that if, because these gatekeepers often control the distribution of your information, and they have a dual role of developers as well as device manufacturers, like even Apple, Google, and Amazon. They not just develop the operating system, they are also the device manufacturers. So that's why they are being called as gatekeepers. So in case they do not follow the EU's Digital Markets Act provisions, then there could be a penalty as high as 10% of their global annual sales, and it could even increase to 20% of their 20% in case of repeated infringements, and in worst case scenarios the company could even be banned from any further acquisitions. So what are the provisions? Let us see all that. So the EU is proposing that the users must have the right to choose and install their apps. So forget now that your phone would come with pre-installed apps. Okay, if you do not want, let's say if you're using an Android phone or if you're using an Apple phone, you would not be forced to have those apps. You would have the ability or the freedom to even remove every app from your phone. Okay, so no Google, no Apple, no Amazon would force you to install their apps. Okay, EU also wants interoperability between the messaging services. So like if I am sending you a message from WhatsApp, it should also let's say reach you on the iMessage. Okay, so that's what EU wants, but of course that would be very difficult because these companies are separately running their own messaging services platform. So interoperability would be very difficult. It would be very costly for these companies to make this service available. Okay, so anyways, it is also calling to have fair access conditions to the app stores owned by the gatekeepers. So currently you know that especially Apple does not allow third-party softwares to be installed on your phones. So now this EU is saying that you should provide fair access to third-party apps also, and these gatekeepers cannot establish unfair conditions for the business users. So generally what happens is that if you are an app developer and you have developed an app and you want to monetize it, so generally these app stores put certain conditions in which due to which becomes very difficult to obtain money which you have earned from the app users of your app users. Okay, so that's why
EU is saying that you cannot impose these unfair conditions for business users, and even you have to provide access to supplementary functionalities of smartphones, like you have this near field communications chip, which otherwise these Apple apps or Google apps are able to access, but functionalities are not provided to the third party apps or even the other apps which app developers have made for themselves. Okay, so that's why it is asking that these companies should provide access to these supplementary functionalities also. So in case these gatekeepers have any acquisition or merger, they will have to inform the European Commission about it. Okay, and it is also forbidding these gatekeepers from ranking their own products or services higher than others. You know that they have arbitrary rules regarding ranking. So what happens is that Apple or Google, they arbitrarily rank their own products or their own apps higher than the competitors. That's what these rules are forbidding them to do now. Okay, so these were the provisions. So now let us see the next topic, which is Olga Tellis case. So recently in the Jahangirpuri case, when the bulldozers uh, uh, just destroyed the pavement dwellers, and a 37-year-old constitution bench judgment has come to the fore now. So what is this judgment? So it is Olga Tellis versus Bombay Municipal Corporation judgment of 1985, and it says that a fiction of pavement dwellers using unreasonable force without giving them a chance to explain themselves is unconstitutional because it is violating their right to livelihood. So at least they should be given a chance to be heard, and a reasonable opportunity must be provided before using force to expel them. Okay, so pavement dwellers also have a right to life and dignity, and you just cannot snatch it without giving them enough time to explain themselves. Okay, so that is what this Olga Tellis case is. So now let's see the next topic, which is All India Household Consumer Expenditure Survey. So government is planning to conduct this consumer expenditure survey, which is conducted, of course, by the National Statistical Office every 5 years. So this is, of course, this survey collects information on the consumption patterns of the country, of households or rather, and it collects information at both the urban and rural level. So it basically collects information about what is the average expenditure on goods, both food and non-food expenditure, and services also. Okay, so that's why using this data they generate estimates of what is the monthly per capita consumer expenditure at the rural and urban level in India. Okay, so based upon these figures only we derive at the poverty estimates. So currently we are only having the data of 2011 and 12. So now the government wants to collect the new data, and generally this survey is conducted between July and June, and the results of this field survey comes out by the next year. So if it is conducted between these 2 months, then the data would come out by June 2023. Okay, so of course separate data for rural and urban parts is collected, and why we are having so of course last survey was done in 2011 and 12, but there was also another survey during 2017-18, but the government of India said that the survey was having some data quality issues. That's why the survey was junked and it was not accepted. So we currently are relying upon the data that or the survey that was conducted during the 2011 and 12 period. Okay, so based upon that we are currently formulating our poverty estimates. Okay, so why the government wants to resume this survey? Of course, we do not have any data after 2011-12. We need real-time data, or we need this new data to estimate our poverty levels. And of course India is also a subscriber to IMF's special data dissemination standard, and it is obliged to follow good practices in certain areas. Okay, so that's why we have to conduct this survey to generate data integrity and to generate new data which is quality data. Okay, so the next topic is Panchayati Raj Divas. So PM Modi has recently addressed all the Gram Sabhas across the country on the occasion of National Panchayati Raj Day. So of course it is celebrated on the 24th of April, because on this very day in 1993 the 1992 Constitutional Amendment Act of 73rd Constitutional Amendment Act came into force. So on this very day we have a direct dialogue with Panchayat representatives. So first time we celebrated this day in 2010. So
Currently in 2022, it is the 13th Panchayati Raj Divas. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.